Warm welcome, viewers. We come to you from the city of Banaras, Kashi, now Varanasi. Our Covid Dispatch will roll out of this city today. We are going to cover both the rural and the urban areas of the Varanasi district. But before I get you that ground report, I want to quickly take you through the impact of a story we had covered on Covid Dispatch. It gives me, even in these very bleak times, viewers, it gives me heart to say India Today's story has made impact. Now, we had covered in Etawah a couple of days ago the Bhimrao Ambedkar Hospital. It's the biggest government hospital, the biggest Covid center in the entire Etawah district. And in that, we had seen that 100 Covid patients were defecating outside because all bathrooms were locked. Not just that, there were no doctors on the floor. There was no basic equipment available for these patients. More so, there was mounds of garbage all across the Covid ward. All of that has changed since our story has been aired. There are bathrooms now, which you can see on your television screen, that have finally been opened up for Covid patients. They can use the bathrooms, finally. There are doctors on the floor, and all the garbage mounds have been removed. These look like two very different hospitals, viewers, and this change has taken place in 2 days' time. There were so many people who called us on why we were entering Covid wards, what was the need of showing this. This was the need. That in 2 days, a hospital has changed overnight, and 100 Covid patients now can use a bathroom and have access to a doctor. It's because we aired the story and you watched it. With that, viewers, let's come down now to the city of Varanasi. I am on the Ganga. You can see all the ghats there. Extremely quaint, extremely quiet. Surreal to me, because at this time, the time of the Aarti, this is chock-a-block. For anyone who's come to Banaras will know what I'm talking about. All you see is a vast emptiness and a surreal silence, which is practically only broken with the crackling of the pyre, wood from a pyre of the dead of the city. But I'd like to say that the city, in terms of Banaras city, Varanasi city, the situation has improved quite a bit. The rural areas of Varanasi still a concern. Welcome back, viewers. You're watching our Covid Dispatch. We're on a boat on the city of Varanasi. Like I said earlier, it's surreal to be here, to hear the silence actually, with just, maybe you can hear the temple bells ringing right now because it's the time of the Aarti. But let's get you now our next story from the rural belt of Varanasi and parts of Allahabad and Kanpur as well. Have you got your vaccine is a question I want to ask you. Most of you might have, some of you might not, some of you might be struggling to get in a slot. It's not, this story is not an attempt to vaccine shame you, viewers. It's not for you to make, to make you feel bad that you're getting your shot while the others haven't. But it's it's an attempt to make you realize the inequality of India's vaccine plan. Why do I say that? Take a look from at this report from the rural belt of Varanasi. The pandemic began with being called the rich man's disease, the disease of the city. But as the pandemic wore India down and permeated to its rural crevices, left out in the cold in this pandemic theatre have been the most wanting. With no information, no oxygen, no beds, no access, no jugaad, and when it came down to vaccination, no smartphones to register. दिक्कत काफ़ी हो रही है क्योंकि यहाँ पे सब लोगों के पास इतनी जानकारी नहीं कि अपने से खुद से ही मोबाइल में रजिस्टर करके वो अपने आप को टीकाकरण के लिए पंजीकृत कर सकें। तो मैं यहीं पे रहता हूँ। मेरे अगल बगल में किसी को अगर से जानकारी चाहती है तो मैं उन लोगों का हेल्प कर देता हूँ। कुछ लोगों को मैंने अपने फोन से ही उनको पंजीकृत किया है वैक्सीनेशन के लिए। टीका लगवाना चाहे अभी तो नहीं सोच रहे, सब लोग लगवाए तो हम भी लगवाए। गांव भर में ज्यादा पर मोबाइल कीपैड है, अभी तक उतना सब रखते नहीं। एंड्रॉइड गांव में अभी तक उतना जानकारी नहीं है किसी को। मतलब बड़ा फोन, हाँ, हम बड़ा फोन नहीं रखे हैं, कोई बहुत कम रखे हैं लोग। These villages have only been electrified recently. Access to proper internet is a far cry. Getting signal on your phone in itself a challenge. जागरूकता कम है ग्रामीण क्षेत्रों में, और दूसरी बात एक भ्रम हुआ है। अभी जो 15 दिन पहले जो मौतें हुई हैं,
55+ में, उसमें कुछ केस ऐसे हुए हैं जिनके पहली डोज लगी है और दूसरी डोज के पहले ही वो ऑक्सीजन कमी से खत्म हो गए। लोग डर गए, इसकी वजह से पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में एक हवा फैल गई कि इंजेक्शन नुकसान कर रहा है। ये बहुत बड़ा भ्रम है, इसको किसी भी तरीके से ग्रामीण के मन से निकालना पड़ेगा। रही रजिस्ट्रेशन की बात, तो शुरुआत में बगैर रजिस्ट्रेशन हुआ, लोग बढ़े, पर जब ये रजिस्ट्रेशन का नंबर आया तो ग्रामीण और रुक गए, क्योंकि मोबाइल के बारे में पूर्णतया या तो युवा जानता है और उसको कैसे रजिस्ट्रेशन करना इसके बारे में अभी कोई कुछ नहीं बता पा रहा है। कहते हैं वहाँ सहायता मिलती है, पर जब वो वहाँ सहायता जाएगा तो वहीं इंजेक्शन लग जाए उसके, या वैक्सीनेशन हो जाए, वो ज्यादा बेहतर है। अभी तक गांव में किसी को नहीं पता है ना, स्वास्थ्य विभाग से ना कोई टीम खालिसपुर में आई है, अभी कोई पता ही नहीं है क्या अभी कैसे टीका लगेगा। अभी सब लोग भ्रम में हैं। ग्रामीण एरिया में ये काम करेगा, लोग रजिस्टर कर पाएंगे? नहीं करेंगे, उसकी में बहुत दिक्कतें होंगी और लोगों में भय और जो सिग्नल न होने से, इंटरनेट न होने का असर बिल्कुल पड़ेगा और उसका वैक्सीनेशन जो है वो कम होगा। अगर ये आधार कार्ड वाला होगा और अगर गांव कैंप में होगा तो बहुत जल्दी वैक्सीनेशन पूरे ग्रामीण क्षेत्र में हो सकता है। A village in Kanpur district to the villages of Varanasi, the story is the same. No clue of the vaccination process. However, the local MLA here feels otherwise. जायज प्रश्न करना है, लेकिन आज आप किसी भी घर में चले जाएं, आज इसी घर में आप जहां हम खड़े हैं, इसी घर में अगर आप पता करेंगे तो एक कम से कम एक मोबाइल तो हर घर में है, और ज्यादा से ज्यादा किसी घर में 2 मोबाइल है, कोई किसी घर में 3 मोबाइल। आज इसी घर में खड़ी हूँ, मेरे पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, नहीं, इसी घर में खड़ी हूँ। हाँ, नहीं, चाहे इनके पास फोन हो पर कनेक्शन ना हो तो कैसे करेंगे? नहीं, कभी दिक्कत हो रही होगी, मैं मान रहा हूँ कि कहीं न कहीं दिक्कत कभी कभी आप शहर में भी रहेंगे तो कभी कभी नेटवर्क के इशू होता है, लेकिन नेटवर्क है। सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम सब लोग मिल करके, चाहे हमारे आप लोग मीडिया के लोग हों, चाहे हम राजनीतिक व्यक्ति हों, चाहे समाज के स्वयंसेवी संगठन के लोग हों, सभी लोग जब हम जन जागरूकता बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से सभी घरों में मोबाइल हैं, सभी जगह इंटरनेट का कनेक्शन है। कभी कभी नेटवर्क आते जाते रहते हैं तो उसकी थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, लेकिन निश्चित रूप से हम सब लोग इसको जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे, मेरा पूर्ण विश्वास है। टीकाकरण के लिए 45 से ऊपर वालों को तो फ्री वैक्सीन लगी रही है हमारे CSC में, और हर बार रोज केंद्र हमारे डिफाइंड होते हैं कि यहाँ के यहाँ लगाई जा रही है। प्लस 18+ से 44 तक के लिए रजिस्ट्रेशन करा के फिर उनका वैक्सीनेशन हो रहा है। सर, ये रजिस्ट्रेशन गांव में आप खुद ही देख रहे हैं, कैसे मतलब आप कैसे मैनेज करेंगे? देखिए मैम, मोस्टली हमारे CSC केंद्र हैं। जैसे अभी गेहूँ खरीद के हो रहा था तो CSC केंद्र हैं हर गाँव में है, और हमारे घाटमपुर में 8 CSC केंद्र हैं, वहाँ से रजिस्ट्रेशन हो रहा है। और बाकी हर गांव में लोगों के पास जो यूथ जनरेशन है उनके पास एंड्रॉयड फोन है, उससे भी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। उनके खुद के फोन से जी, उनको खुद के फोन से ही वो कर पाएंगे, क्योंकि OTP आता है उसमें। तो उनको बाकी किसी कोई दिक्कत होती है तो हमारे MIC जो हमारे CSC है वहाँ जाके उनकी हेल्प की जाती है। तो जो आप CSC सेंटर बोल रहे हैं सर, वहाँ पर क्या होता है? क्या कोई जाके बोल सकता है कि मेरा रजिस्टर कर दो? हाँ, वो हेल्प की जाती है उसमें। बाकी अभी तक फोन पर ही होगा, मतलब कोई और रास्ता नहीं है, दूसरा नहीं कर सकता है। चाहे CSC सेंटर जाएं, अपने गांव में रहें, रजिस्टर अपने फोन पे। जी, 18+ वालों को, 18 से 44 वालों को खुद करना। The village of Bhadras have had no light for 4 days, but the pradhan of this village, strangely, very confident of टीकाकरण। सिग्नल है, किसी भी सुविधा से कोई गांव वंचित नहीं है। लाइट अभी वो कतराई सीजन चला, इसमें लाइट नहीं आई, बाकी अब लाइट पर्याप्त आएगी तो हमें उम्मीद है कि सफलता मिल जाएगी टीकाकरण में। India's rural belt mirrors the inadequacies of our vaccination rollout plan. With what you do see, vaccination, टीकाकरण, a privilege than a right here. Privilege is difficult to question when it is yours, but we must. Because this, the rural belt of our country, is completely at sea. No clue on how to get themselves registered for that shot. And first, before that, is of course the hesitancy. The hesitancy, it's very much here because there is no information. Reporting with camera person Hitesh Kumar, Preeti Choudhry in Uttar Pradesh for India Today.
You know, it's often said, like rivers, I'm on one, Ganga. Cities also have a destiny. Here, especially the people that you speak to here will say that rivers, cities, every, people, they all have a destiny. It's the city's destiny that the people say is what it's going through right now, where Mahakal, it's the city of Mahakal, Lord Shiva, Mahadev, is angry with the city of Varanasi at this point of time. We don't know that, but we do know that the city has suffered tremendously in the last 20 days. Not just the city, the areas around it, the district of Varanasi. We're going to get you more from the rural belt of India, of Uttar Pradesh, on the other side of this break in Covid Dispatch. Stay with me. They're extremely quaint, extremely quiet, surreal to me, because at this time, the time of the Aarti, this is chock-a-block. For anyone who's come to Banaras will know what I'm talking about. All you see is a vast emptiness and a surreal silence, which is practically only broken with the crackling of the pyre, wood from a pyre of the dead of the city. But I'd like to say that the city, in terms of Banaras city, Varanasi city, the situation has improved quite a bit. The rural areas of Varanasi still a concern. Ashes to ashes, dust to dust. Death is not new to the city of Mahakal. Varanasi, Banaras, Kashi, the eternal city by the Ganga, has been one with the living, the dead, and the dying. But this time, Mahadev seems to have briefly left his own abode. इस बार जो पिछले बार हुआ उसके कारण हमको लग रहा है इस बार लापरवाही हुआ है इसके कारण इस बार ज्यादा हो गया है और यहाँ पे मेडिकल व्यवस्था भी उतना है नहीं बीएचयू भी है तो उस कोविड हम बीएचयू भी गए थे एक बार कोविड के समय तो देखे तो उसमें कोई नहीं जा रहा है कोविड जो वार्ड है एक बड़ा वार्ड है उसके अंदर कोई नहीं जैसे लगा भूत बंगला है ये कोई उसके अंदर नहीं जा रहा है इस वाले में एक राजू त्रिवेदी है तिरपा भवी पे वो सुबह 8 बजे कई लोग को फोन किए कोई साथ नहीं दिया तो उनकी वाइफ पकड़ कर लेके गई अस्पताल हॉस्पिटल ले गई तो हॉस्पिटल बाहरी से पर्चा फिलिप करके और दे दिया और वो वहीं पे रह गई 8 बजे वो गुजर गए 8 मेरे मतलब जानकारी में हाँ तो 8 बजे वो गुजर गए तो वो ई रिक्शा से गली में आए गली में मैडम ऐसा स्थिति था बताइए अपना मतलब बनारस जाना जाता है अपने अपनों से आप पूछ लेंगे ना एरिया कहाँ जाना है तो वो आदमी पहुंचा देता है और ये काल में ऐसा हो गया कि 3 बच्चे थे उसके कोई उठाने वाला नहीं था 3 बच्चे उठा नहीं पा रहे थे बॉडी हेल्दी थी वो ले जा नहीं पा रहे थे तो उसमें जी गमछा कोई साथ नहीं दिया मतलब इतने लोग देख रहे हैं कोई छूने नहीं गया इतना डर लोगों में आ गया था कोई छूने भी नहीं गया कैसे कैसे गमछा से बांध के गट्ठर जैसे उन लोग लेके गए फिर उसके परिजन आए दूसरे दिन उन लोग डेड बॉडी लेके आए यहाँ पे तो उसमें मात्र 7-8 लोग थे इतने डर हो गए If you have ever been to Varanasi, then you will not recognize it. Steeped in spiritualism, this has always been a highly chaotic city, not anymore. The eerie stillness of its bylanes is broken with the crackling embers of the pyres of its dead, and so many have died. There are 2 cremation ghats here, Manikarnika Ghat and Harish Chandra Ghat. All COVID bodies are cremated at the Harish Chandra Ghat. Professor Shukla sits, watches his life partner, his wife, the mother of his children, his friend, his colleague at the Banaras Hindu University, Dr. Shakuntala Devi's last rites, conducted by his son Rajiv. COVID took her, but he's convinced it was the lockdown and she not being able to go for her morning walks. He keeps saying it over and over again, telling us about how they walked daily. तो जिसका टहलने का अभ्यास होता है 1 घंटा चलने का वो अगर 5 मिनट चलेगा तो उससे बहुत फर्क पड़ेगा खाना खा के लेट जाना
खाना खा के थोड़ा सा टहलना चाहिए, नहीं हो पा रहा था इस वजह से तो ये पहचान। The COVID situation is better in Varanasi city, but the bodies, they keep coming. And those unable to afford wood wait for the likes of Dr. Shakuntala to be consigned to flames so they could reuse that wood. This behind me is the Harish Chandra Ghat. It's the designated COVID ghat for cremations. All the bodies that you see here are COVID bodies, all of them. Usually, I've come to Banaras so many times, happier times, one would suggest. Elections, festivals, on personal visits, so many times. This is most tragic, is what you see. I have never really seen a body burn at the Harish Chandra Ghat. You usually see them burn at the Manikarnika Ghat. But there's been a steady stream, and with what people tell us, this ghat hasn't stopped burning since the last 20 days. Our boatman is convinced. Lord Shiva is angry. Angry because the government has broken too many old buildings, too many old structures, too many temples, too much history to build the Kashi Vishwanath corridor. The work of which still continues even through the lockdown. सब विपरीत हो रहा है, मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं। बाबा को ये स्मार्ट, ये जब से ये बहुत हजारों साल पुरानी ये काशी नगरी है, तो आप इसको क्यों स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं? इसको एटीटीज आने दीजिए। ये बाहर से लोग आते हैं, क्या देखने आते हैं? बनारस की गलियां देखने आते हैं, बनारस की साड़ी देखने आते हैं, और गलियों से बहुत मशहूर है बनारस। आप यहाँ से निकलेंगे, आप चौखंबा चली जाएंगे, कैंट तक चली जाएंगे, ऐसी गलियां यहाँ पे। अब उसको बड़े बड़े गली कर देंगे, स्मार्ट सिटी करने के चक्कर में रहेंगे, तो ये जो पुरानी जो अवस्था जो पूजा पाठ वाली है सब तो खत्म हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए एक बिल्डिंग वहाँ पे बिरला भवन, बिरला लोग बनाए हैं। उसमें क्या है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो गंगा जी में मतलब काशी में आते हैं अपना मोक्ष करने के लिए, तो उसमें रुकते, खाना पीना खाते, मर जाते, तो उन्हीं पे उनका दाह संस्कार हो जाता है। इसके लिए काशी बनी हुई है। अब काशी को आप एकदम बेकार कर दे रहे हैं। The COVID crisis in Varanasi city is better today. From abject COVID mayhem, it's now controlled. All you see are mostly cops on the roads and construction work for the corridor. But the rural belt tells a different story. Not far from Varanasi, this village, Kashai Gaon, has lost 7 people in 8 days. ऑक्सीजन भी नहीं लगाए थे, खाली बस आ रहे हैं डॉक्टर साहब देखेंगे तो ऑक्सीजन लगाएंगे, ये कह रहे थे। बस ये कह रहे थे, बस यही कह रहे थे। उनका ऑक्सीजन लेवल चेक किए थे कि नहीं किए थे? कुछ नहीं किए, वो एकदम टोटल कुछ नहीं किया। 6000 का दवा भी मंगाए और दवा भी एक भी हमको मिला नहीं। 3 घंटे में कुल काम हो गया उनका। फिर यहाँ पर कोई अधिकारी आया है, कोई टीम आई है? यहाँ पे कितना 7 लोग मरा है? कितने लोग मरे? 7 लोग इस गांव में मरे हैं। इस गांव में 7 लोग मरे हैं। कितने दिन में? 13 तारीख से लेके 8 तारीख तक, मतलब 8 दिन के अंदर अंदर 7 लोग मर गए हैं। 8 दिन के अंदर अंदर 7 लोग मरे हैं इस गांव में। 13 तारीख को 2 डेट एक साथ हुआ है। मेरी माता जी गए हैं, मेरी बड़ी अम्मा एक साथ इधर एक जगह ही रहते हैं। हाँ। It's hospitals like these that have come up overnight because there is absolutely no space in the city to take in corona patients in the Varanasi district. Lots of complaints coming in of this hospital where large sums of money has been taken. Patients who are on the deathbed have been taken in, but even something as small as oxygen is also not administered. The Sunrise Hospital at Chitaipur, 25 kilometers from Varanasi, has gained notoriety in just 1 month of it being set up. As most villagers are not RT-PCR tested, the hospital takes them up, promises ICU, promises good health care. But this is the condition of its ICU. No basic equipment, no ventilators, but very high bills. वहाँ पर तो हमारा कोई इलाज नहीं हुआ। उसके बाद जो कि जबरी पैसा हमसे लिए हैं, 45,000 रुपया हमसे लिए हैं। अब कोई इलाज नहीं हुआ है। पैसा नहीं देंगे तो हम बॉडी नहीं देंगे। It's a strange time for Varanasi, stranger still for its people. This is the Dashashwamedh Ghat. Remember the Aarti here. This is how it takes place today. One lone person conducts it.
for symbolism. पहले तो यहाँ पर 11 आप होते थे। 11 नहीं 7 होते थे। 7 हाँ। हाँ जी, 70 इसी जो करते हैं। अभी अकेले ही करते हैं। जी अभी अकेले। पर ना कोई है ना कुछ, यहीं तो यहाँ पे तो सब नाव में लोग बैठे होते थे हर जगह। हाँ जी, वो अब और जैसे कोरोना नहीं था उस समय आप आते तो यहाँ कम से कम 20-25 हजार पब्लिक रहती थी। धर्म ग्रंथ जो बहुत पहले हजारों साल पहले बता चुका है कि तुलसी के पेड़ पौधे से और पीपल के पेड़ से तो ऑक्सीजन बहुत सारे मिलते हैं। यज्ञ हवन करने से ऑक्सीजन, गाय के शुद्ध घी और गोबर से, जौ तिल से हवन करने से तो ऑक्सीजन बहुत सारे मिलते हैं। बताया गया कि वातावरण में जितनी अशुद्धि होती है धुआं से उसका शुद्धिकरण हो जाता है। And this is Varanasi today, and this is the story of its every district, living the COVID health story all alone. Atmanirbhar is this city of Mahadev. Reporting with camera person Hitesh Kumar, Preeti Choudhry for India Today. With that, it's a wrap on this COVID dispatch. Do think about that story. Do speak up because, like I said, you know, to question privilege when it's yours is difficult, but we must do so. With that, we wrap up our edition from Varanasi. Like they say in Banaras, Har Har Mahadev. Thank you for joining us.